Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, okay, we will continue where we left last. So, is Tankar Numericals. So far, we were doing was the density correction. So, there is another one. So, you can write this numerical and you can give an attempt. I will explain you on the board also. We are just changing the density to the volume through the temperature of the volume. Now here in this question he has given you tank dimensions and the tank contains already something is there what we were calling OBQ, unpumpable ballast to sounding of 10 centimeter, and crude oil of RD 0.85 at 15 degree centigrade is to be loaded. Also 2% of the tank volume is to be left for expansion. तो इसको लिख लीजिए पहले, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है आपके रिटर्न्स में. क्या बच्चे लिख लोगे न्यूमेरिकल तो बताना. Yes, sir. Question लिखिए.
Okay. So I'm just coming on the board. Hope all of you can see the board. All of you can see the board. Yes, sir, visible, sir. Yes, sir. This question, what he has given you, is your tank. And this tank contains already up to 10 centimeter. There is a ballast of 10 centimeter. And also he wants 2% of the volume of the tank is to be left for expansion. That means at any time after loading there should be 2% of the space available in the tank. 2% of the volume of the tank should be available even when the ship is at maximum temperature. So what time there will be a least ullage? When the ship is at maximum temperature, isn't it? So maximum temperature is at 40 degrees centigrade. That means at 40 degrees centigrade also I should have at least this much space available on top. 2% of the tank volume should be available even at 40%. Now, as we were doing this, screen blur आ रही है sir. Yes, sir. Not clear to everyone? सर नहीं सर, काफी ब्लर है सर. सारी स्क्रीन ब्लर है सर. How about this camera? Can you see? No? No, sir. इसमें तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. चलो कोई बात नहीं. ठीक है. नेट की प्रॉब्लम है कि नेट प्रॉब्लम मस्ट बी दी. प्रॉब्लम तो अभी भी ऐसा ही है. चलो anyway you can do, I just whatever currently you can see 10 centimeter. This is already I have on board, and 2% of the tank volume is to be left for expansion. So what do we calculate? We calculate the maximum volume available at 40 degrees centigrade, or we call maximum of the GOV at 40 degrees centigrade will be how much? Tank volume minus this 10 centimeter. So 10 centimeter will give me how much? 20 into 12 into 0.10. So that this is equal to 24 meter cube plus 2%. So these are the volume to be left. This is already on board. So this is the ODQ quantity 24, and for expansion we want to leave 2%. So 2% will be 20 by 12 by 15 is the 2%. That comes equal to 72 meter cube. That means 24 meter cube आपका space ये चला गया, and 72 meter cube space आपको expansion के लिए खाली छोड़ना है, isn't it? So what is the volume left? Sir कुछ दिख नहीं रहा है सर. सर कुछ दिख नहीं रहा बोर्ड पे. आपकी आवाज भी सर बीच-बीच में. सर स्क्रीन ब्लर. Yeah, तो मुझे नेट की प्रॉब्लम है because I am on the hotspot, so we'll go back to the slides only. So just to explain you,
I thought I could. So you have seen the question. Let me go back to slides only. So only thing what we can do is that just to explain you that how we are going to question. The 10 centimeter is to be left, and also this diagram somewhere. सर इसकी फोटो भेज दीजिए बोर्ड पे। Yeah, this is what it is. Can you see the slide? नो सर। नो सर। Slide भी नहीं दिख रही? Slide भी नहीं दिख रही? नो सर। ब्लैक No, ब्लैक sir. आ रहा है सर। नो सर। हाँ जी, सर ब्लैक स्लाइड तो दिखनी चाहिए। Can you not see the slide on your screens? नो सर नो सर। नहीं सर अरे ऐसा कैसा हो गया? यहाँ तो दिखा रहा। हाँ सर अभी आई क्वेश्चन तो अब दिख आई रहा। सर। अब आई सर। अब आई। चलो थोड़ा सा डिले है। So this is basically what is there in front of you, unpumpable ballast 10 centimeter, and this is the volume to be left for expansion, 2% of the volume of the tank for expansion. So now we will calculate at 40 degree centigrade how much will be the volume available to you. When the ship reaches at 40 degree centigrade, आपके टैंक में कितना वॉल्यूम होना चाहिए एक्सपैंड होने के बाद. So that is, अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिए 10 सेंटीमीटर 20 Sir, into 12 into सर जब 2% ऑफ टैंक लेंगे एक्सपेंशन के लिए तो उसमें अनपंपेबल ब्लास्ट जोड़ के लेंगे या हटा के लेंगे उसको? नो उस वक्त हम उसको नहीं लेंगे because he has mentioned 2% of the tank volume. So tank volume we will calculate total tank volume is 20 into 12 into 15, isn't it? That is the total tank volume. Now, he is not saying the remaining of the tank volume. If he says 2% of the remaining of the tank volume, so we will take complete 20 into 12 into 15, uska 2%. So that will come to, I think, how much? 72? 72। Yeah. So 72 मेरा space हमको वैसे खाली छोड़ना है. I cannot utilize, and 10 centimeter I already have ballast in the tank or the water in the tank. So 10 centimeter will be how much? 20 into 12 into 0.1, 24 meter cube. So 72 plus 24, 96 meter cube volume मेरे पास available नहीं है. That means at when the ship is at maximum temperature, मेरे टैंक में कितना वॉल्यूम होना चाहिए? 20 into 12 into 15, that is 3600 minus 96. So this should be the volume. 3504 meter cube should be the volume in the tank, isn't it? अब इस टैंक में 40 डिग्री पे इतना वॉल्यूम है. Can you calculate the density at 40 degree centigrade? Because density is given at 15 degree centigrade. So we can calculate the density at 40, then multiply the volume with 40, you will get the mass. Now this mass is going to remain same, whether you are at 40 degree or whether you are at loading temperature. So we take this mass back to the load port, and there we say this mass ka, what is the loading temperature? 30। 30 डिग्री, isn't it? So ये जो आपके पास मास आएगा, इस मास का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम होगा. एंड वंस आई हैव द वॉल्यूम, दैट मींस लोड पोर्ट में मैंने अपने टैंक पे इतना ही वॉल्यूम रखना, इससे ज़्यादा नहीं लोड करना. तो 30 डिग्री पे आपका वॉल्यूम आएगा. दैट मींस आई हैव टू कैलकुलेट जीओवी एट 30 डिग्री.
एंड देन डेंसिटी एट 30 डिग्री, उसकी तो जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास वॉल्यूम आ गया एक बार, मेरे को क्या चाहिए LH. So volume at 30 degree or GOV at 30 degree, if I can calculate, divide by the area, I get the height of oil and then the LH. Understood? सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा. आफ्टर 40 डिग्री के बाद सर का डेंसिटी हाँ. निकाल लिया, फिर क्या करना सर? तो ठीक है, तो ये आपने पहले समझ लेना. ठीक है, आई कैन शो यू द सोल्यूशन बट नो पॉइंट. सोल्यूशन दिखाऊंगा फिर आपका अपना CPU काम नहीं करेगा. सो दिस इज माई टैंक. इसमें 10 सेंटीमीटर मैंने, मेरे पास OBQ है, बैलास्ट है, वाटर है, जो भी आप लिखना चाहते हो, विच इज इक्वल टू 24 मीटर क्यूब एंड 2% आई हैव टू लीव फॉर एक्सपेंशन एट ऑल टेम्परेचर्स. To calculate GOV at 40 degree, so I calculate OBQ is equal to 24, volume to be left for expansion 72. So total volume which is not available is 96, or GOV at 40 degree centigrade. Maximum volume at 40 degrees should be 3600 minus 96, that means 3504. ये आपके पास आ गया, वॉल्यूम आ गया, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी एट 40 डिग्री, आपके पास मास आ गया, isn't it? So whatever this mass comes, इस मास का मैं, can you calculate the volume at 30 degree? How will you calculate the volume of this mass at 30 degree? So 3504 divided by area. No, that is the बच्चे total volume at 40 degree centigrade. So पहले आपने इसका मास निकाला, जरा मास निकालिए, कितना आता है? So सर 2925.84. Okay, 2925.84. सर मेरा 2946 आ रहा है 30 पे वेट. Okay, weight is 2925.8. Okay, this is in front of you. Volume of the tank is 20 by 12 by 15, 36. Volume unpumpable 24. Volume to be left for expansion is 2% of 3600 is 72. Maximum volume in tank at 40 degrees centigrade should be so much. Expansion के बाद मेरे टैंक में इतना ही वॉल्यूम होना चाहिए. दिस इज बेसिकली नॉट होना चाहिए, दिस इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर लोडिंग. बेसिकली होगा तो ज़्यादा होगा, तो 10 मीटर क्यूब जो है 10 सेंटीमीटर वो भी होगा. तो ये आपके पास वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है. दिस इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर लोडिंग. सो मैंने इसका GOV इज 3504, RD मैंने निकाल लिया 40 पे, तो इसका मैं मास निकाल लेता हूँ. तो ये मास आ गया 2926 या 2925.8. अब इस मास को मैं लोड पोर्ट पे ले जाता हूँ. लोड पोर्ट पे मीन्स इस मास का मेरे को 30 डिग्री पे, आई वांट टू कैलकुलेट एट 30 डिग्री 2925.8 मेट्रिक टन विल बी हाउ मेनी मीटर क्यूब. सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिएगा वापस. इसको बेसिकली हम लिखेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम loaded or loadable volume, what we can say. तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज द 3504 should be the maximum volume which is available for loading. ओके, 2925.8 आ गया आपका. अब इसका मेरे को वॉल्यूम निकालना है. 2925.8 मेट्रिक टन का वॉल्यूम चाहिए मेरे को एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. हाउ कैन वी कैलकुलेट?
Mass Anybody? divided by density. Mass divided by density at 30 degree. Correct. तो ये इक्वेशन है कि मास हमें पता है, मास रिमेन सेम, isn't it? So this is what you have to see. Mass is always constant, so yes, constant है. So volume into density is equal to mass. Therefore, mass will be equal to, or volume will be equal to rather, mass divided by density at 30 degree centigrade. And उस वॉल्यूम को मैं अगर एरिया से डिवाइड करता हूँ, I will get the height of oil. Now please remember here, there is a ullage after loading. तो आपने height of oil तो निकाल ली. ullage के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना, बिकॉज आपके टैंक में ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर नीचे पानी है. दैट इज गोइंग टू रिमेन देयर. तो ये जो आपने 14.49 हाइट निकाली है, वो आपने खाली ऑयल विच यू हैव लोडेड. हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए. चलो गुड. सो ये तो था हमारा एक मेथड. सो लेट मी ट्राई अगेन इफ आई कैन गेट बैक ऑन द बोर्ड. इफ यू कैन सी द बोर्ड क्लियरली, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आई वांट टू गो टू द सेकंड मेथड. So second method is fluctuation है. Can you guys see the board? No. Yes sir. Blurred है sir, blurred है. दिख रहा है? क्लियर है? Blur है sir. No. क्या हो गया? सब चीज तो ठीक थी. क्या प्रॉब्लम हुआ है? Go back to the slides only. चलो, ये तो एक मेथड था that when we are changing the density to the temperature of volume. The second method is normally what we call the ASTM. स्लाइड नहीं आ रही. ASTM टेबल आएगी, थोड़ा सा डिले है. ठीक है. नहीं आया. नो सर, अभी नहीं आया. एक मिनट. Not yet? नो सर, अभी नहीं आया. नहीं सर, अभी भी नहीं है.
जियो में प्रॉब्लम आ गई। नहीं सर नहीं है। ओके बच्चे, ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं। लेट मी ट्राई अनदर ट्रिक, ट्राई करना पड़ेगा। लाइट भी नहीं आ रही, बोर्ड भी नहीं दिख रहा था, अब तो काम गया। आ गया स्लाइड, आ गया। सर कल कर लेंगे, आज रहने दो। कल थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे, चलो मैं मेथड नहीं कराऊंगा। नहीं आया स्लाइड। स्लाइड नहीं शो हो रहा कल था। हमने नहीं आया सर, पता नहीं किसको शो हो रहा है स्लाइड। आपकी आवाज भी डिस्टर्ब आ रही है सर। नहीं आ रही सर स्लाइड। पिछला क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया सर। पिछले क्वेश्चन में भी स्लाइड पिछले में तो आ रही थी स्लाइड। सर रहने दो आज। सर बहुत लैग कर रही है सर, आवाज भी लैग कर रही है, स्लाइड भी नहीं आ रही अच्छे से। सर ठीक है बच्चे, ओके, कोई बात नहीं, चलो एनीवे वी विल कवर अप टुमारो। सो टुमारो वी हैव बेसिकली 2 periods, so 2 hours. So anyway, एटलीस्ट आज आपने कुछ नहीं करना, अच्छा। ओनली जहाँ तक हमने किया है चेंज ऑफ डेंसिटी जो हमने किया है इसको प्लीज स्टडी रखना, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए इस टाइप का। सेकंड मेथड वी विल डू टुमारो, हाउ वी प्रोसीड, हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विद यूजिंग द ASTM टेबल्स। ऑलराइट, ऑल ऑफ यू, मैंने आपके ग्रुप में भी डाला था। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट द ASTM टेबल्स। यस सर। यस सर। हाँ चलो ठीक है, ओके तो सर। ASTM टेबल को थोड़ा खोल के देख लीजिए एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू टुमारो। आज के लिए सॉरी टू से जियो फाइबर यार अच्छा था, बट सम प्रॉब्लम आई थिंक आउटेज, पावर आउटेज जियो। चलो ओके देन डियर, बाय बाय, टेक हैव योर लंच। आई थिंक लंच के बाद थैंक तो यू सर। हैव सेंड अ मैसेज करके, या वेलकम बच्चे, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम डियर, वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम। सो चलो कल अच्छा ब्रेकफास्ट खा के आना। या वेलकम बच्चे, वेलकम। कल थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेंगे, सो इसको देखते हैं कितना कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।